Assalamu Alikum. I'm Muhammad Shahid and today we will learn some animals names in Chinese language. मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आज के लेक्चर में हम कुछ जानवरों के नाम सीखेंगे जो चाइनीज़ ज़बान में कैसे बोले जाते हैं। मैं पश्तो में भी उसकी ट्रांसलेशन आपके सामने करता हूँ बाद में। So first of all, we will learn that as you all know, who are familiar with English, they know that the animal in front of you is hen. उर्दू में हम इसको मुर्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्गी. So in Chinese, what do we write for it? Mu. Mu ji. Mu ji. Mu ji. Murgi. Hen. In Chinese language, we call hen as mu ji. Mu ji. Chargita by Chinese jabaki mu ji way. Mu ji. Mu ji. Okay, let's proceed towards the next animal. So we have a rooster. Yes, we got him. In English, we know this animal with the name rooster. उर्दू में हम इसको मुर्गा कहते हैं, मुर्गा. So what do we call it in Chinese? और Chinese ज़बान में हम इसको क्या कहते हैं? गोंग जी, गोंग जी, गोंग जी, गोंग जी, गोंग जी. This is Dian, okay? Gong Chi. Bangita, Chinese jabaki Gong Chi way, huh? Bangi. Okay, next animal. Oh, you all know this. We know this by the name fish. उर्दू में इसको हम मछली कहते हैं, मछली. So in Chinese, we call it yu, yu, yu. Roll your tongue and squeeze your sound when you take it out from your mouth. अपनी जो लिप्स है, होंठ है, उनको गोल घुमाइए और स्क्वीज करके इससे ये लफ्ज़ निकाले. यू, यू, यू. मछली. महिता पर चाइनीज़ जबकि यू वही. यू, यू. So next word is okay. We got a very interesting animal and we call it camel in English, and in Urdu we call it ऊंट. ऊंट. ठीक है. उख्ते उख्ता मंगा पर चाइनीज़ जबकि सवायो. So luo, luo. Tuo, luo tuo, luo tuo, luo tuo. So luo tuo is camel. Ukhta for Chinese jabaki luo tuo, luo tuo. That's it. Vartawai tiksho. Luo tuo. Okay, so the next animal. What do we have?
Okay, we got a duck. We got a duck. What do we call for it in duck in English? बतख. बतख को चाइनीज ज़बान में क्या बोलते हैं? Duck. So we call it या या zi या zi या zi बतख इता po in Chinese jabaki ya zi da warta wai ठीक शो. Let's proceed towards the next animal, and the next animal here with us is monkey. You all know this naughty animal. बंदर को हम चाइनीज ज़बान में क्या बोलते हैं? So what do we call how how zi how zi how zi shadow ta पर चाइनीज जब के how zi da warta wai ठीक शो. Okay, so let's proceed towards the next animal and let's see what do we have. Okay, we got a buffalo. We got a buffalo. Bands को हम चाइनीज ज़बान में क्या कहते हैं? Bands. Shui shui牛水牛水牛水牛مخدا په چاینیز ژبه کې دا وایي شوی نیو شوی نیو شوی نیو شوی نیو. Okay, what do we have next? Okay, we got a goat. So for goat, we know it by the name goat. बकरी 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 को हम चीनी ज़बान में क्या बोलते हैं? तो बिज़ेता मुंगा प चाइनीज़ ژبه کې یعنی په چینی ژبه کې څه وایو؟ شانیانګ 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 बिज़ेता په चाइनीज़ ژبه کې شانیانګ دا ورته وایي ٹھیک شو. Okay, so we got an ostrich. You all know this. We got an ostrich. So شترمرغ शुतुरमुर्ग को हम चाइनीज़ ज़बान में क्या बोलते हैं? So I'll tell you now. थो थो न्याओ थो न्याओ थो न्याओ शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग था पर चाइनीज़ ज़बान की
鸵鸟鸵鸟鸵鸟鸵鸟دا ورته وایي. Sure. Let's proceed ahead and get to know about the last animal of today's lecture, and it is a sparrow. A sparrow. Chiria. Chiria. So what do we call a sparrow in Chinese language? Ma. Ma. Chue. Ma chue. Ma chue. Chanchanita pa Chinese jabaki ma chue. Ma chue. Da ورته وایي. So this is all for today. I hope that you would have learned a lot from this lecture. If you need guidance about Chinese language, you must consult me in order to help you out with your problems. अगर आपको चीनी ज़बान सीखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल सामने आ रही हो, तो you must tell me and I will be there to guide you. چاته په چینی ژبه کې زده کولو کې څه مسله وي نو زما سره رابطه کولی شئ. دا زما چاینیز لینګویج میډ ایزي په نوم باندې چینل دی په یوټیوب باندې. په هغې کې مختلف ټاپکس باندې ویډیوز اپلوډ کوم، نو تاسو هغه هم سرچ کولی شئ او پرسنلی هم تاسو رابطه کولی شئ in order to learn Chinese language. او زه به تاسو ته نور هم داسې انټرسټینګ معلومات د چینی ژبې باره کې راوړم مخې ته او یو بل سره به میلاویږو داسې انشاءالله. So see you in next lecture. د الله په امان.